होंगे जो ये इसके जानकार होंगे आप इन्वेस्टमेंट्स के, तो आप सोच रहे होंगे कि आज मैं क्या सीखूंगा, मुझे तो सब कुछ पता है। तो मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ नॉलेज इज नॉट इग्नोरेंस माय फ्रेंड्स, इट इज एक्चुअली द इल्यूजन ऑफ नॉलेज। हमें लगता है हमें सब पता है, बट हमें शायद बहुत कुछ नहीं पता है। आज 19 साल इस इंडस्ट्री में देने के बाद भी मैं आपको कह सकता हूँ कि व्हेन आई गो टू एनी सेमिनार, आई गो विथ एन वेरी ओपन माइंड कि कुछ नया सीखने को मिलेगा, राइट? और जो जानता हूँ शायद और भी उससे बेहतर जान पाऊँ। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, लिसन टू दिस सेशन विथ वेरी ओपन माइंड, डोंट प्री जज और प्री एम्प्टेड। एक चीज और बताना चाहता हूँ, इस सेमिनार में जो भी व्यूज है ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं, और मैं शायद बायस्ड भी हो सकता हूँ, क्योंकि जिस चीज से मुझे सक्सेस मिली है, आदमी अ पर्सन टेंड्स टू बी बायस्ड टुवर्ड्स दैट। सो आई वुड सजेस्ट यू टेक योर ओन डिसीजंस एंड कंसल्ट योर ओन एडवाइजर और डिस्ट्रीब्यूटर अकॉर्डिंगली, राइट? सो हम पैसे क्यों सेव करते हैं? व्हाई आर वी ऑल सेविंग मनी? बिकॉज वी ऑल हैव ड्रीम्स। हम सबके सपने हैं। वी वांट टू बाय आवर ड्रीम हाउस। हम सबको एक बहुत सुंदर घर बनाना है, राइट? या वी वांट टू प्रोवाइड अ गुड फ्यूचर फॉर चिल्ड्रन। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे दुनिया की बेस्ट स्कूल कॉलेज में पढ़े। एंड फाइनली वी वांट टू हैव अ हैप्पी रिटायर्ड लाइफ। पैसों के लिए हमें कभी चिंता करने की जरूरत ना पड़े। आई थिंक दीज आर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गोल्स टू ऑल ऑफ आवर हार्ट्स, एंड इन्वेस्टिंग कैन हेल्प यू रियलाइज योर गोल्स इन लाइफ। सही तरीके से निवेश आपको हेल्प कर सकता है। ये मेरा फेवरेट एड है जो आज से लगभग 50 साल पहले अमेरिका में न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। जो भी इस वेबिनार को सुन रहे हैं, 25, 30 ईयर ओल्ड, 40 ईयर ओल्ड के जो लोग हैं, मैं आपको स्ट्रांगली बताना चाहता हूं इसके बारे में। एंड आई विल रीड दिस फॉर यू, राइट? बिकॉज दिस इज सो पावरफुल। दिस इज द प्लेजर ऑफ वॉकिंग टॉल। जरूरी नहीं है कि हम वेल्थ खाली सपनों के लिए बना रहे हैं, पैसा हम खाली अपने ड्रीम्स के लिए बना रहे हैं। इट इज फॉर एक्चुअली वॉकिंग टॉल। एंड आई विल स्टार्ट दिस नाउ। इट सेज योर सेविंग्स, बिलीव इट और नॉट, affect the way you stand, the way you walk, the tone of your voice. In short, your physical well-being and self-confidence. A man without savings is always running. He must take the first job offered, or nearly so. He sits nervously on life's chairs because any small emergency throws him into the hands of others. Without savings, a man must be too grateful. Gratitude is a fine thing in its place, but a constant state of gratitude is a horrible place in which to live. A man with savings can walk tall. He may appraise opportunities in a relaxed way, have time for judicious estimates, and not be rushed by economic necessity. A man with savings can afford to resign from his job if his principles so dictate, and for this reason, he will never need to do so. A man who can afford to quit is much more useful to his company and therefore more promotable. He can afford to give his company the benefits of his most candid judgments. A man always concerned about necessities such as food and rent can't afford to think in a long-range career terms. He must dart to the most immediate opportunity for ready cash. Without savings, he will spend a lifetime of darting, dodging. A man with savings can afford the wonderful privilege of being generous in family or neighborhood emergencies. He can take a level stare into the eyes of any man, friend, stranger, or enemy. It shapes his personality and character. The ability to save has nothing to do with the size of income. Many high-income people who spend it all are on a treadmill, darting through life like minnows. The dean of American bankers, JP Morgan, once advised a young broker, take waste out of your spending, you will drive the haste out of your life. Will Rogers put it this way: I would rather have the company of a janitor living on what he earned last year than an actor spending what he will earn next year. If you don't need money for college, a home, or retirement, then save for self-confidence. The state of your savings does have a lot to do with how tall you walk. Guys, this is so powerful, so powerful. मुझे जब मैं बार बार ये पढ़ता हूँ ना, तो मुझे गूज बम्स आते हैं। दोस्तों, आपके पास जब पैसा होता है, आपके पास जब आपकी सेविंग्स होती है, आपकी ना एक कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल की होती है। यू विल नेवर रश टू डू एनीथिंग। यू विल सिट बैक एंड रिलैक्स
and think, you know, in a right way कि मुझे ये opportunity में जाना चाहिए कि नहीं, right? And today, after 15 years of practicing this, I can tell you, I can feel that confidence. I have the pleasure of walking tall. मैं किसी से भी आंख में आंख डाल के बात कर सकता हूँ, right? So this is what I would strongly recommend all the people who are young, particularly because you have time and you should really practice this. Finally, good financial planning हमें कैसे करनी चाहिए, वो अगर ये स्लाइड अगर आप समझ जाएंगे तो you would have done a very good planning of your financial life. सबसे पहले आपके पास जो भी expensive loans हैं, please try to pay them off. When I say expensive loans, I mean credit cards, you know, I mean personal loans जहाँ पे 18-15% लग रहा है. Home loan is a good loan, education loan is a good loan, right? बाकी loans धीरे धीरे आप जितने जल्दी हो सकता है खत्म करें. उसके बाद सबसे पहला चीज है protection. Have you taken a cover for yourself, life insurance cover, right? A term plan, right? So अगर आपके पास term plan है which is around 20 times of your annual income, I think you are in a good position. उसके बाद एक अच्छा health insurance coverage, और आज के डेट में when I say अच्छा health insurance, I say at least 15 to 20 lakhs. And if you're living in metro cities, maybe 25 lakhs for the entire family, right? And finally, home and motor insurance, which I'm sure you will have. उसके बाद we have to plan for our short term goals like emergency funds or vacation planning, right? या कुछ short term purchase आपको करना है. अगर आप उसके बाद आपको जाना है long term planning के लिए, which means retirement planning. And remember why I've written retirement planning the first, because this is the most important goal in your life. In fact, it is even more important than your child education planning. Unfortunately, in our country, as parents, we plan for our children first, and we never plan for our retirement, right? I would today tell you, do the reverse. And third thing is house purchase. Fourth is any other large goal-based planning. फिर उसके बाद, if you've done all of this, then you have to do make a will. ये हम लोग बहुत लोग नहीं करते हैं. And keeping the family involved in the process. अगर आज आप ये सेमिनार अकेले देख रहे हैं, I think you're doing injustice to your family. Ideally, आज संडे है, आप लोग सब फ्री हो, you should have involved your spouse, wife, your husband. You should have involved your children if they are above 15. I can guarantee all of you कि 12 साल के ऊपर के बच्चे लोग इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. तो you should have ideally involved all of them in this session. Because finally हम किसके लिए पैसा कमा रहे हैं? अपने परिवार के लिए, family के लिए. And if they are not aware कि हमने उनके लिए क्या किया है, imagine what will happen. आपने ये seminar attend कर लिया, सब कुछ कर लिया, but if something happened to you tomorrow, everything goes with you. All the learnings goes with you only. It's never been shared with your family. Right? Hire a good advisor if required, right? I told you in the beginning, investing is simple, but not easy. If you're able to manage it yourself, you are you're very welcome. But if you're not, hire a good advisor, okay? Or a mutual fund distributor. Review it once a year. This is not like कि हर हफ्ते, हर संडे, हर मंथ एंड आपको देखने की जरूरत है. साल में एक दफा, एक बार अगर आप रिव्यू करते हैं, it is more than enough, right? So this is what your planning is. Now, why we need to, we are all at different stages of life, right? At this point, more than 500 people are listening to this. हम सब अलग-अलग stage of life में हैं. At 22, you have little income and little savings. At 27, you got married, शादी हो चुकी है, income बढ़ गई है, husband wife both काम कर रहे हैं, savings भी थोड़ी बढ़ी है. But at 40, you are between 40 to 50, you are at the peak of your career, right? That is when you should save the maximum. Because जब 60 हो जाएंगे, ना हमारी income रहेगी, ना हमारी savings रहेगी. The only thing we'll have is खर्चा. And remember, friends, all of us today have a very finite period to save. Unlike our parents and grandparents who would start their career at 20 and would work till 60, 70, this generation would start their career at 25 or 30 and would want to retire by 50. We have 20, 25, at the max 30 years to work. So we have no choice but to save higher and create wealth earlier. So my first mantra that I'm going to give you today is start early, right? Unfortunately, I couldn't practice this. जब मैं 30 साल का था, that's when I started my savings, and today I regret it very much. So आप लोग में से जो लोग यहाँ पे early हैं, 20, 18, 15, please start today, right? Why? Look at the example of X and Y. X is 25, started at the age of, X at the age of 25, invested for the next 11 years. 35 में उन्होंने बंद कर दिया,
and how much he was putting? 5,000 rupees. So he ended up putting 6.6 lakhs, okay, which at retirement became 5 crore, assuming 15% return, right? So only for 11 years he put, matlab at 35 he stopped his investments. There is this other person, he started at the age of 40, thinking ki life 25 mein kaun shuru karta hai? This is the age to enjoy. And then for the rest of his career, he started putting money till 60. And how much he was putting, friends? 15,000. तो इन्होंने लगभग 38 lakhs rupees invest किए, which at retirement gives him only 2 crore. Isn't this very shocking that X started at 25, Y started 40? X ने सिर्फ 11 साल पैसा डाले, Y ने 21 डाले. X puts 5,000, Y puts 15,000. Yet X makes 5 crores, Y makes less than half of what X made, right? So I want to ask you, what is working for X that is not working for Y? And the answer is time. Time is working for X and not working for Y. और एक बार दोस्तों टाइम जब चला जाता है ना, तो वो वापस कभी नहीं आता है. The cost of delay can be devastating. Suppose you are 25. I'm asking all of you to save 1 lakh per annum. सिर्फ 1 लाख रुपए साल के, यानी 8,000 रुपए महीने के, which is not difficult. और अगर आप लोग ये 60 तक करते हैं, and suppose आपका investment 12% return earn करता है, 12%. Friends, you will create a retirement corpus of almost 5 crore. 1 lakh रुपए सालाना for next 35 years, assuming 12% return, you will end up earning 5 crores at retirement. और अगर आपने 1 साल की डिले की, सिर्फ 25 में शुरू करके 26 में शुरू किया, तो आपने 1 लाख नहीं गवाए हैं. You end up losing 52 lakhs, 52,000 because of that 1 year delay, right? And guys, I joined this industry at 24. मैं बॉम्बे आया था, काम करना शुरू किया था 24 में. मैंने मेरा जो फर्स्ट सेविंग्स है मैंने 30 में शुरू किया. मैंने 6 साल गवाए. And I'll tell you what I have lost in this 6 years, right? So this is 1 year. Now I'm going to share with you 3 साल में क्या होता है. 3 साल में आपने 3 साल डिले किया. You didn't start at 25, you started at 28. You didn't invest 3 lakhs. You have now end up losing 1 crore 41 lakh 30,000 3 साल में. और मैंने जैसे कि आपको बताया, I lost 6 years. I should have started at 24. I started 30. तो दोस्तों मैंने 6 लाख नहीं गवाए हैं. वो 6 साल डिले, मैंने 2.5 करोड़ रुपया गवाए हैं. I have ended up losing 2 crore 41 lakhs rupees because of that 6 year delay. जो मैं कॉर्पस बना सकता था 5 करोड़, now I'll end up making half of what I could have made, right? Friends, one request to you, जो लाइफ में मैंने मिस्टेक की है, don't do this mistake. अगर आज आपको समझ में आया है, आज से आप चालू करो. चाहे वो 1,000 रुपए महीने के हो, चाहे वो 2,000 हो, चाहे 5,000 हो, it doesn't matter. What you start today is what matters, right? So if one message you can take home today, all of you, is start today if you haven't, right? So this is very important. My next point is, in my opening this thing I said, I will show you the only wealth creation formula, the magical formula that can create wealth. ये दुनिया में एकमात्र फॉर्मूला है जो वेल्थ बनाता है, which is called compound interest, और हिंदी में चक्रवर्ती ब्याज, right? So इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं. प्रिंसिपल आप कितना डालते हैं, रिटर्न आप कितना कमाते हैं, एंड टाइम आप कितने टाइम के लिए डालते हैं, right? Now look at this example. This is a very, very powerful example. Suppose you do 50,000 rupees SIP every month, okay? और आपका ये SIP 12% रिटर्न अर्न करता है. Guys, how much time it takes to reach the first 1 crore? Almost 10 years. Next question, how much time it takes to reach from 1 crore to 2 crore? Half. पहले में almost 10 साल लगे, अभी 4 साल 3 महीने. How much time it is taking to reach from 2nd to 3rd crore? Hardly 3 years. And guys, how much time it is taking to reach from 9 crore to 10 crore? 10 महीने. Isn't this very surprising? It took us almost 10 years to reach the first 1 crore and 10 months to reach the last 10 crores. और ये पूरी जर्नी करने में हमें 26 साल लगता है. So friends, if somebody is 24 today and somebody can start a 50,000 rupees SIP today and continue for 26 years, assuming 12% return, he or she can end up getting 10 crores rupees at the age of 50, right? Isn't this very powerful?
This is the game of compounding. And Albert Einstein says compound interest is the eighth wonder of the world. This is the greatest mathematical discovery ever made. जो समझ गया वो पैसे बना लिया, और जो नहीं समझा वो लाइफ लॉन्ग खोते रहेगा. एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं. Suppose you are 22. You know, every year you are saving $2,000. I mean, you can convert into rupee also. This is just an example. So 22 में आपने 2000, you did only for first 6 years. Started at 22, stopped at 27, and you did nothing. उसके बाद में कुछ नहीं डाला आपने. So at 65, friends, you have $1.3 million. $1.3 million. Guys, one request है, if you are attending from your mobile phone, if you can, make it possible to see from your iPad or a pad or a laptop, because इसमें काफी numbers हैं, मोबाइल पे शायद आपको ठीक से दिखेंगे नहीं, तो अभी भी काफी टाइम है. अगर आप quickly switch कर सकते हैं तो strongly recommend that. Otherwise you will miss half of what I've been trying to show. Okay, coming back to this, if first 5 years में आपने पैसे डाले और फिर जिंदगी भर नहीं डाले, you end up making $1.3 million. And example B, उन्होंने first 6 years नहीं डाले और बाकी पूरी जिंदगी पर $2,000 डालते गए. And guys, he also end up making $1.36 million. Isn't this very, very shocking? कि आपने, आपने सिर्फ 6 साल डाले और कुछ नहीं डाला, और उन्होंने 6 साल नहीं डाले और पूरी लाइफ डाला. You remember one of the old sayings, an early bird catches the worm, right? आप सुबह उठ के अगर आप करते हो तो आपको बहुत फायदा होता है. This is an example of that. And इससे ज्यादा आपको कौन बता सकता है? This guy, Warren Buffett, जो आज 93 years के हैं. I was lucky to attend Warren Buffett की जो annual meeting होती है Berkshire Hathaway की ओमाहा में this year. This was the first time I could go and see him and Charlie Munger in action. ये हमारी लाइन के ये गुरु हैं, भगवान हैं. बहुत कुछ सीखा है हमने इनसे. और इन्होंने 10 साल की उम्र में पैसे डालने चालू कर दिए थे, right? 10 years. And today is 93 and he says I was late. इसीलिए मैंने आपको दोस्तों, आप लोग सबको कहा था कि you could have invited your 10-year-old children, 12-year-old children, right? So but 10 साल की उम्र में भी डालने के बाद पहला 1 billion came after his 50th birthday. 99% of his wealth has actually come after his 50th birthday. 97% of his wealth has come after his 65th birthday. इतनी जल्दी शुरुआत करने के बाद भी जो ये टावर्स बने हैं, ये लास्ट के 20-30 सालों में बने हैं, राइट? दैट इज व्हाई दिस इज अ गेम ऑफ कंपाउंडिंग. जितना हम जल्दी शुरू कर सकते हैं उतना हमें फायदा मिलेगा इसका. ना हम शुरू तो कर दें, बट हम कहां से निवेश करें, राइट? वॉरेन बफेट ने सारा पैसा इक्विटीज में बनाया है, डायरेक्ट स्टॉक्स में. और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने इक्विटीज में पैसा डाला और बनाया. बट वी आर ऑल कॉमन पीपल. हमें पता नहीं है कि हमें कौन सा शेयर, कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, कब डालना चाहिए, कब नहीं डालना चाहिए. And that is why a wonderful vehicle called mutual fund can help us. This vehicle has been kept for the common people like you and me. Okay, हम सभी के लिए बनाया गया है. इसमें आप 500 रुपए से कर सकते हैं. And let me tell you the beauty of this. So mutual fund बहुत लोगों को जिनको समझ में नहीं आता है, this is like an aeroplane. अगर हमें बॉम्बे से दिल्ली फ्लाई करना है, राइट, वेरी फ्यू ऑफ अस कैन चार्टर दिस प्लेन. हम में से बहुत कम लोग हैं जो ये पूरा प्लेन को चार्टर कर सकते हैं और जा सकते हैं. अदरवाइज हम सब पैसेंजर्स क्या करेंगे? 200-300 लोग हैं, सबने 3,000, 4,000, 5,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किए, टिकट्स खरीदी, तो हम अब सब प्लेन में बैठ गए. कैन वी स्टिल फ्लाई टू दिल्ली? द आंसर इज नो, बिकॉज वी नीड अ पायलट. हम में से शायद किसी को प्लेन चलाना नहीं आता है. एंड वंस वी हायर अ पायलट, पैसे दे दिए, टिकट्स ले लिए, we can now go to Delhi or any other destination for that matter. This is exactly a mutual fund, friends. We are all investors. हम सब investors है. किसी के पास 1,000 रुपए है, किसी के पास 1 लाख है, किसी के पास 50 लाख है. हमें पता नहीं है कि हमें पैसे कहाँ डालने चाहिए. We all pull this money into a trust, give this money to a professional pilot or a fund manager. That fund manager invests in different kinds of shares and securities on our behalf. Over a period of time, these securities generates returns. और ये रिटर्न्स हम सबको वापस मिल जाता है फॉर अ स्मॉल फी दैट वी पे टू द फंड मैनेजर. दिस इज फ्रेंड्स अ म्यूचुअल फंड्स, राइट? बहुत लोगों को एक डाउट है कि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड मतलब इक्विटीज. रॉन्ग. म्यूचुअल फंड इज जस्ट अ व्हीकल. म्यूचुअल फंड आपका पैसा स्टॉक्स में भी डाल सकता है, बॉन्ड्स में भी डाल सकता है, गोल्ड में भी डाल सकता है.
प्रॉपर्टी में भी डाल सकता है, रियल एस्टेट में डाल सकता है, कमोडिटीज, करेंसीज, कहीं पे भी डाल सकता है, राइट? सो दैट इज व्हाट अ म्यूचुअल फंड डज. There are a lot of advantages of mutual funds which you should know. सबसे पहले बात, we are giving our money to a professional company, whether it is HDFC, Tata, ICICI, these are professional fund managers. हमारा पैसा बहुत डाइवर्सिफाइड होता है, चाहे हम 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, it goes into 50, 60, 70 companies, right? And because this is run by professionals, there is a potential to get higher return versus other fixed avenues in the long term. अच्छी बात क्या है, इट इज वेरी अफोर्डेबल. हम सब लोग जैसे कि मैंने आपको बताया 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं. बहुत जो गरीब लोग हैं वो 100 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं. इनफैक्ट आवर मेड्स, आवर ड्राइवर्स, ऑल ऑफ कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस, एंड वी शुड रियली ट्राई एंड गेट देम आल्सो इनटू दिस, राइट? आई टोल्ड यू दिस इज अ ग्रेट व्हीकल फॉर कॉमन पीपल. इट इज लो कॉस्ट, बहुत ज्यादा फीस नहीं लगती है. एंड आई ऑल्सो टॉक अबाउट द फीस कि क्या आप, हाउ मच यू पे when you invest in mutual funds. Liquidity is there. आप कभी भी buy or sell कर सकते हैं. You can take out your money any point of time. Transparency is there. You know exactly कि आपका fund manager ने पैसे कहाँ लगाए हैं. You can't change, you can't dictate, but आपको पता है कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं. You have flexibility. आप lump sum लगा सकते हैं, आप SIP कर सकते हैं, right? आप बहुत कुछ कर सकते हैं. और आपके पास इतनी choice of schemes हैं. आपको एक दिन के लिए पैसा लगाना है, एक महीने के लिए लगाना है, एक साल के लिए लगाना है, 10 साल के लिए लगाना है, या फिर 20, 30, 50 साल के लिए लगाना है, तो भी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं. एक अच्छी बात और है, गवर्नमेंट हमें काफी टैक्स बेनिफिट्स भी देती है, बिकॉज आई टोल्ड यू दिस इज मेंट फॉर कॉमन पीपल. एंड फाइनली आई एम वेरी प्राउड टू टेल यू दिस इंडस्ट्री इज हाईली रेगुलेटेड. हु इज द रेगुलेटर फॉर दिस? SEBI, Securities and Exchange Board of India. And I can tell you, SEBI is doing a phenomenal work, friends, to protecting the end investor. और फाइनली जब तक एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्टेड नहीं है, तब तक nobody else can exist. You as investors have to make money first, then everybody else in the system can make money, right? So आप बिल्कुल रात को चैन की नींद सो सकते हैं, आपका पैसा सेफ है, फ्रॉड होने के चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं. मैं ये नहीं कहूंगा कि कभी नहीं हो सकता है, हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है, बट इट इज वेरी वेरी टाइटली रेगुलेटेड. Having said that, there are few disadvantages also which you should know. सबसे पहले बात, जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, इट इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट. देयर इज अ मैनेजमेंट फीस, देयर इज अ टोटल एक्सपेंस रेशियो. ये डिपेंड करता है आप कौन से फंड्स में डालते हैं. लिक्विड फंड्स, जो डेट फंड्स होते हैं, उसमें कम होते हैं, 10 पैसे 5 पैसे से लेके ये 2, सवा 2, 2.5% तक भी जाता है, राइट? तो डिपेंडिंग ऑन द फंड, दिस इज व्हाट यू नो. हर वेबसाइट पे, हर फैक्ट शीट पे ये एक्सपेंस रेशियो लिखा होता है, और रेगुलेटर ने लिमिट्स भी बना के रखी है, उसके ऊपर म्यूचुअल फंड्स नहीं जा सकते हैं. आई टोल्ड यू इट इज टाइटली रेगुलेटेड, बट यू शुड नो, ओके? और मैनेजमेंट फीस, जो ये फंड मैनेजर फीस कमाते हैं, उसमें से वो कुछ पोर्शन वो हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी देते हैं. इट कैन बी 0.4%, 0.5% ऑफ व्हाट दे अर्न, और 0.6%. जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, सपोज आप सबने इक्विटी फंड में पैसे लगाए हैं, एंड अज्यूमिंग कि 2% का एक्सपेंस रेशियो है, तो उसमें से लगभग, मैं आपको ब्रॉडली बता रहा हूं, 1% is earned by the management, as the management fees वो कंपनी रखती है, और वो मान लीजिए 1% हमें देती है. अब वो किसी केस में 0.6 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, 0.8 हो सकता है, ये 1% हो सकता है. ये ब्रॉडली आपको पता होना जरूरी है, राइट? सेकेंड, एग्जिट कॉस्ट. अगर आप बीच में से निकलते हैं, आप निकाल तो सकते हैं, बट यू माइट हैव टू पे अ पेनल्टी इफ यू एग्जिट बिफोर 1 year. देयर इज नो गारंटी कि आपने जो पैसा दिया है, आपने फीस दी है, तो यू विल गेट गुड परफॉर्मेंस. There can be a potential poor performance as well, right? And there are complicated tax reporting issues, short-term capital gain, long-term debt fund, equity fund. एक चीज हमेशा और याद रखिएगा, mutual funds can't give you guaranteed returns, right? They cannot give you guaranteed returns. There is a potential market risk with all returns. And another thing can be a problem is mis-selling, right? Sometimes few of the people can guide you wrong products because they may be earning high commissions, right? So you might be a victim of that, right? And that is why a bit of knowledge is always helpful. You should know whom to trust and how to go about, and थोड़ा knowledge होगा तो आप you will be careful there. जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे choices हैं आपके पास, right from 1 day to 3 years. अगर आपको पैसा 1 साल के लिए डालना है, आप यहाँ डाल सकते हैं. आपको पैसा 3 साल के लिए डालना है, आप यहाँ डाल सकते हैं.
आपको पैसा 5 साल के लिए डालना है, आप यहाँ डाल सकते हैं, और आपको 8-10 साल के लिए डालना है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ पे यू कैन एक्सपेक्ट मे बी अराउंड 5-6% रिटर्न, यहाँ पे यू कैन एक्सपेक्ट 8-10% रिटर्न, ओके। और उससे ज्यादा चाहिए 12, 13, 14, देन दीज आर द एरियाज व्हिच कैन गिव यू। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर गोल्स आर, व्हाट योर रिक्वायरमेंट्स आर, आप चूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको एक और बात कि म्यूचुअल फंड्स डाइवर्सिफाइड होते हैं, चाहे आपने 100 रुपए लगाए, चाहे आपने 5 करोड़ रुपए लगाए, चाहे 10 लाख रुपए लगाए, योर मनी गेट्स स्प्लिट इनटू दीज 40-50 कंपनीज इन दिस। सपोज इस केस में 7 रुपए हैज बीन इन्वेस्टेड इन HDFC बैंक, 6% has gone into ITC, ICICI, Reliance, State Bank. That is why this portfolio of mutual fund can never become zero. Always remember, your 100 rupees might show 90, 80, 70, क्योंकि अगर मार्केट नीचे गिरा है तो आपका पोर्टफोलियो नीचे जा सकता है, बट दिस इज टेम्परेरी अनलेस आपने पैसा निकाल नहीं लिया है। एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज बिलीव दिस, अ टिपिकल इंडियन इज कॉन्फिडेंट टू इन्वेस्ट इन अ सिंगल प्रॉपर्टी बट अफ्रेड टू इन्वेस्ट इन अ पोर्टफोलियो ऑफ टॉप 50 बिजनेसेस। हम लोगों को लगता है कि हमें प्रॉपर्टी बहुत सेफ लगती है, बट हम जब यहां डालते हैं तो हमें लगता है ये रिस्की है। एक्चुअली इट इज द अदर वे अराउंड, राइट। नाउ आई वांट टू जस्ट क्विकली टेल यू अबाउट द वेल्थ क्रिएशन जो एक म्यूचुअल फंड में होता है, राइट। दिस इज वन ऑफ द अगेन ओल्डेस्ट फंड इन द कंट्री। डोंट गो बाय द फंड नेम, ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं जिन्होंने वेल्थ बनाई है, ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल देने के लिए मैं बता रहा हूँ। 22 साल पहले अगर हम में से किसी ने 1 लाख रुपए लगाए होते तो दोस्तों आज इट हैज बिकम 1 करोड़। योर वेल्थ हैज ग्रोन बाय 100 टाइम्स। यू नो, पिछले 20 सालों में आई मेट 10,000 ऑफ पीपल। मुझे किसी ने नहीं बताया कि और कहीं पे पैसे डाले होते तो शायद इतनी वेल्थ बनती। यस, अगर आपने अपने बिजनेस में वेल्थ बनाई है, विच इज गुड, अंडरस्टैंडेबल। कोई एक आध लैंड में शायद हो सकता है 100 गुना उससे ऊपर बना होगा, बट वेरी फ्यू एग्जांपल्स जहां पे यू नो यू हैव क्रिएटेड 100 टाइम्स वेल्थ कंपेयर टू दिस, राइट। और ये मजे की बात है कि 22 years 100x, इन नेक्स्ट 3 years इट बिकेम 150x, 150 गुना। अब आपको समझ में आ रहा है कंपाउंडिंग, मतलब 22 साल लगे 100 गुना बनाने में, अगले 3 साल में 150 गुना, अगले 1 साल में 200 गुना, 26 साल में आपके 200 गुना बन गए थे, और उसके 2 साल बाद यानी कि आज 28 साल में 250 गुना। दोस्तों दिस इज द गेम। और अगर मैं आपको बोलूंगा कि हो सकता है 5-6 साल में ये 500 गुना हो जाएगा, 500 टाइम्स, राइट। सो इन 30-35 years your wealth has gone up by almost 500 times. Look at the power of compounding, right? So this is, but ये प्रॉब्लम क्या है, ये सिर्फ कागज पे है, किसी ने वेल्थ बनाई नहीं है। यू नो व्हाई? बिकॉज किसी ने भी 28 साल दिए नहीं है। और ये रिटर्न्स जो आते हैं ना, ये रिटर्न्स एक वन स्ट्रेट लाइन नहीं है फ्रेंड्स। मेनी टाइम्स अप, किसी साल 56% डाउन, किसी साल 21% डाउन। एंड इक्विटी हैज अ रूल, इफ यू कांट हैंडल मी एट माय वर्स्ट, यू डोंट डिजर्व मी एट माय बेस्ट। अगर आप मेरे गलत टाइम के साथ आप समय साथ नहीं देंगे तो यू वोंट बी एबल टू गेट माय बेस्ट आल्सो। एंड लुक एट द जर्नी ऑफ दिस, यू नो 3-3.5 साल लगे, कुछ रिटर्न नहीं बना। अगर आपने 2007 में डाले और एक साल में आपका पैसा 50% नीचे हो गया था, वहां से आपको 6 साल लगे, कुछ वेल्थ नहीं बना। और इसीलिए बहुत सारे लोग पहले ही यहाँ ये जहाज से उतर जाते हैं, दे डिसएम्बार्क, एंड दैट इज व्हाई दे आर नॉट एबल टू क्रिएट दिस वेल्थ। इसलिए मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, ये कागज में बना है, ये रियल लाइफ में नहीं बना। ये जो वेल्थ है फंड्स ने बना के दी है, बट हम लोग ने नहीं बनाई है। एंड देयर इज दिस बिग गैप। इसीलिए मैंने फर्स्ट में कहा था वी आर आवर बिगेस्ट एनिमीज। हम हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें मालूम है कि क्या होएगा, और इसलिए हम लोग गलत एक्शन कर जाते हैं। ये जो सारा गेम है ना, ये सारा गेम पेशेंस का है। पेशेंस इज अ वर्च्यू इन इन्वेस्टिंग, बट इन शॉर्ट सप्लाई विथ मोस्ट, राइट। प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, हमें समहाउ ये सिखाया गया है, लेफ्ट वाला इमेजिनरी चार्ट, कि व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कहां पैसा डालते हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। योर इन्वेस्टमेंट्स, कौन सा स्टॉक, कौन सा म्यूचुअल फंड में डालूं, देन व्हाट मैटर्स इज योर रिटर्न्स। मार्केट टाइमिंग, हमें लगता है अभी सही टाइम नहीं है, अभी सही टाइम है, टैक्स एफिशिएंसी होनी चाहिए, प्रेडिक्शंस। हम ये एक गलत इन्वेस्टिंग पिरामिड के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। जो राइट पिरामिड है वो ये है कि आप क्यों डाल रहे हो, व्हाट इज योर गोल। यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड योर गोल, देन टू अचीव दैट गोल यू हैव टू डिसाइड योर प्लान, रिटर्न प्लान। उस प्लान के बेसिस पे आप एलोकेशन करेंगे कि कितना इक्विटी, कितना गोल्ड, कितना डेट, कितना उसमें। फाइनली व्हाट मैटर्स इज योर बिहेवियर। अगर आपका बिहेवियर, इफ यू आर नॉट एबल टू स्टिक टू द प्लान, देन ये प्लान का कोई मतलब ही नहीं है।
एंड ओनली 10% ऑफ द रोल इज आपने कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदा है, कौन सा स्टॉक खरीदा है, कौन से टाइम पे लगाया है. दिस इज व्हाट इट इज. हमें आज तक हमने हमेशा उल्टा है समझा है. हमें लगता है हमारा इन्वेस्टमेंट इज एवरीथिंग, राइट? दैट इज नॉट. फाइनली आई वांट टू शेयर समथिंग वेरी शॉकिंग. आप में से काफी लोग पीपीएफ में पैसा डालते होंगे. एटीसी के अंदर हम सबको 1.5 लाख रुपीस हर साल टैक्स डिडक्शन मिलता है, राइट? और हमें सिखाया गया है पीपीएफ से बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है. ये मैं मेरा पर्सनल व्यू बता रहा हूं दोस्तों. इट्स नथिंग राइट और रॉन्ग. पीपीएफ इज गुड फॉर दोज पीपल जिसको गारंटेड रिटर्न चाहिए, चाहे वो 6% हो, चाहे 5% हो, चाहे 7% हो, चाहे 8% हो, राइट? ओनली इफ यू आर लुकिंग फॉर गारंटेड रिटर्न देन पीपीएफ इज द बेस्ट. बट एक बात बताऊं, एनीवे आप 15 साल दे रहे हो पीपीएफ के लिए. अगर आपने 15 साल टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता है कोई भी, राइट? लुक एट द वेल्थ क्रिएशन. अगेन मैं आपको ये एक एग्जांपल दे रहा हूं और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. 25 साल पहले आपने अगर 1 लाख रुपए लगाए होते खाली यहाँ पे, सिर्फ 1 लाख रुपए एक बार, टुडे यू हैव क्रिएटेड ऑलमोस्ट 200 टाइम्स वेल्थ, 186 टाइम्स, 2 करोड़ रुपए बन गए हैं. और मैं आपको बेट कर सकता हूं कि आज तक की आपकी सारी पीपीएफ की पासबुक मिला के 2 करोड़ नहीं हुआ होगा. आई कैन बेट यू. बिकॉज हमने गलत थिंकिंग की है. जब 15 साल अगर आपको वेल्थ है तो डेट में नहीं होना चाहिए. दिस इज माई बिलीफ. इट हैज टू बी इक्विटी. फॉर मी डेट इज मेंट फॉर शॉर्ट टर्म, 1 साल 2 साल 3 साल. 15 साल का पैसा अगर आप डेट में रखते हो तो यू कांट बीट इन्फ्लेशन ऑल्सो, राइट? सो दिस इज अ बिग लर्निंग. एंड सपोज आपने 1-1 लाख रुपए करके हर साल पीपीएफ में डाले हैं, तो आपने 96 से लेके 2023 तक 27 लाख रुपए आपने डाल दिए हैं. 27 लाख पीपीएफ में आपने जो डाले हैं, दैट हैज बिकम ऑलमोस्ट 1 करोड़, राइट? विच इज नॉट बैड. बट गाइज, इफ somebody would have told you 27 years back, put in let's say this tax saving fund HDFC, 1-1 लाख अगर आपने डाले होते, आज 27 लाख का वैल्यू हो गया 9.27 करोड़. इनफैक्ट ये मार्च का फिगर है, मेरे हिसाब से अभी 10 करोड़ हो गया है. 10 करोड़ वर्सेस 1 करोड़ रुपए. नाउ टेल मी व्हाट इज दिस? इज द कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस. दिस इज व्हाट वी पे. इसीलिए दोस्तों मैंने आपको फर्स्ट लाइन में क्या बताया था, इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट. आज शायद आपको ये बात पता चली है जो आपको पिछले 20 सालों में पता नहीं थी, राइट? दिस इज व्हाट नॉलेज कैन डू टू यू. 10 गुना आपने पैसे बनाए हैं. Unfortunately, only 1% of the people in our country knows about this कि यहाँ पैसा long term के लिए यहाँ डालना चाहिए. Otherwise, blindly we have been doing PPF for last 30-40 years. Now, I just want to quickly share my story. For me, Ramdev ji is my guru. मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है. He came to Bombay with nothing, and 0 to 1,000 crores was his journey. This was a presentation he did in 2016, and he says, "You too can do it." राइट? आप भी कर सकते हैं. मजे की बात क्या है, दिस हैज बीन हिज जर्नी. 1 करोड़ से 30 करोड़ बने, फिर 30 के 10 हुए, 10 के 100 हुए, वापस 30 हुए, 30 के 500 हुए, वापस 250 हुए. कोविड से पहले 1850 थे, कोविड के बाद 1150, एंड टुडे दिस इज 2200 करोड़. 4 बार उनकी लाइफ में द मनी हैज गॉन डाउन बाय 50%. इट इज नॉट वन स्ट्रेट लाइन. रिमेंबर that Reliance growth fund वाला example जो मैंने आपको दिया था, it is never a one straight line. Lot of ups and downs are there. But 2016 में he made 1,000 crores and 2022 में he made 2,200 crores. जितना उन्होंने पहले 30 साल में नहीं कमाया, उतने अगले 6 साल में वो पैसा उन्होंने डबल कर दिया. That is how compounding runs wild, right? Inspired by this, I decided to play my one idiot journey. अगर आप देख सकते हैं, One Idiot is inspired from this wonderful movie. It's on YouTube. मेरे पास ज्यादा समय नहीं इसलिए मैं ये मूवी प्ले नहीं कर सकता. That movie changed my life 10 years back. मैंने भी डिसाइड किया मुझे 1000 करोड़ तो नहीं बन सकता हूँ, but can I make 100 crores? Right? In that movie, that idiot was worth 100 crores by 50th birthday. I took a challenge कि मुझे भी 100 crores बनाना है. Though I don't need 100 crores in my life, हम में से बहुत कम लोगों को 100 crores जरूरत है, बट ये एक चैलेंज करके दिखाना था. और उस 100 करोड़ का प्लान क्या था, अगर मुझे 20 साल में करना है, बिकॉज आई वाज 30 देन, मैं 30 साल का था, 20 years if I have to play, then I need to put 4 lakh rupees SIP every month, guys. And I have to increase this SIP every year by 10%. मतलब next year it should go to 4 lakh 40, 4 lakh 80, and so on and so forth.
if I play this game for 20 years and assuming if I earn 15%, there is no guarantee that I will earn 15%. Okay. Then I will hit 100 crore mark. That was my idea. But one thing I want to tell you, in 2010, when I started playing this game, I was not having 4 lakh rupees. मुझे 4 लाख रुपए महीने डालने थे, but I was not having 4 lakh rupees. मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए थे, सिर्फ 10,000, राइट? तब से मैंने डालना चालू किया. The only good thing which I did was kept on increasing my SIP. Me and my brother started increasing our SIP very rapidly. हम जितना भी कमा रहे थे उसमें से खर्च का साइड करने के बाद जो बच रहा था सीधा हम SIP कर रहे थे. 3 लाख की SIP थी, फिर 4 लाख की हुई, 5 लाख की हुई, 6 लाख की हुई, करते करते टुडे इट शुड हैव बीन 18 lakhs. एंड ये टारगेट हमने 5-7 साल पहले ही लिख दिया था. वी जस्ट रोट इट बिकॉज आई रियलाइज इफ यू अनाउंस इट, इफ यू टेल इट पब्लिकली, फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं है टू गो फॉर प्लान बी. यू हैव टू डू इट. ओके. एंड टुडे आई एम प्राउड टू शेयर इट शुड हैव बीन 18 lakhs by now, but we are already ahead of target. We are doing 22 lakhs 15,000 SIP per month. Me and my brother we are doing, और हमारा सारा पैसा यहाँ जाता है. अगले 4 साल में if we meet again, my endeavor is to put 40 lakhs a month, 40 लाख. Now why I am so aggressive? The logic is very simple. क्योंकि मैंने पहले बहुत लेट शुरू किया था. Remember, I started very late. मुझे 4 लाख रुपए महीने करना था. I could only start with 10,000. तो वो जो पीछे का गैप है, आई एम ट्राइंग टू टू कवर दैट गैप, राइट? रिमेंबर गाइस, द फर्स्ट आइडिया, सिंपल बट इजी टू ओवरलुक, इज दैट बिल्डिंग वेल्थ हैज लिटिल टू डू विथ योर इनकम बट लॉट्स टू डू विथ योर सेविंग्स रेट. ओके. दिस वाज माय नेक्स्ट पॉइंट व्हिच वाज इन्वेस्ट रेगुलरली. सो ये मैंने लाइफ में कभी डिस्टर्ब नहीं किया, राइट? मेरे इससे पहली गलती हुई थी स्टार्ट अर्ली, बट उसके बाद मैंने कभी गलती नहीं की. मैंने इन्वेस्टमेंट रेगुलरली करते गया, चाहे जितना भी था. 10,000 से शुरू किया और आज 22 लाख तक है. दैट आई हैव नेवर मिस्ड इट. 22 लाख जाने हैं तो जाने हैं. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू प्ले, एंड दिस इज अ स्टोरी वी ऑल हैव हर्ड फ्रॉम आवर ग्रैंडमदर. एवरी लिटिल बिट एड्स अप. क्रो एंड द वाटर स्टोरी. आप डालते जाओ, पानी अपना ऊपर आ जाएगा. आप पैसे डालते जाओ, यू विल बी एबल टू रीच एनी गोल्स दैट यू हैव, राइट? दिस इज अ क्लासिक प्रॉब्लम वी डू. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैसे कमाते हैं, फिर हम लोग पैसे खर्चे करते हैं. बिकॉज वी हैव नो कंट्रोल ऑन स्पेंडिंग, वी डोंट नो हाउ मच वी आर गोइंग टू सेव, राइट? और मैं भी यही गलती कर रहा था. पहले 6 साल मैंने ये गलती की, 24 to 30. बट देन 30 आई बिकेम स्मार्ट. आई स्टार्टेड अर्निंग मनी, और उसमें से 10%, 20%, 30%, वॉट एवर पॉसिबल, मैं नेक्स्ट डे इट शुड गो इनटू SIP. Whatever remaining, then I should spend. I will not feel guilty at all. Warren Buffett says, don't save what is left after spending, spend what is left after saving, right? If you can do this, and I can tell you, the biggest invention, one of the biggest invention that has happened in the mutual fund industry is the invention of SIP. ये इतना automated कर दिया है कि आपको और मुझे सोचने की जरूरत नहीं है. हर महीने बिना बताए हमारे अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, और उसी के कारण हमारी वेल्थ बन जाती है, right? So this is what you have to know. और SIP का एक नियम है दोस्तों. SIP has a rule. Money has a rule. Money says first 15 years take care of me. आप SIP डाले 3 साल में, अगर आपने देखोगे क्या बना, कुछ नहीं दिखेगा. 5 years also nothing. 10 years also nothing. But जब अगर आप 20 साल डालोगे ना, you will be able to create your own tree, money tree, mango tree, जो भी बोल दो आप. जिंदगी भर आपको फल मिलेंगे, जिंदगी भर आपको छाया मिलेगी, और जिंदगी भर आपको ऑक्सीजन मिलेगा. पहला पैसे का रूल है, पहले 15-20 साल तुम मेरा ध्यान रख लो, देन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ आई विल टेक केयर ऑफ यू, राइट? दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ मनी एंड रूल ऑफ SIP. चाहे वो फॉरेन वेकेशन क्यों ना हो, यू वांट टू गो टू दुबई, यूरोप, 10,000 SIP फॉर 1 year और 2 year आप करो. यू कैन प्लान टू गो फॉर एनी ट्रिप यू वांट. जस्ट लाइक अ हाउस इज मेड ब्रिक बाय ब्रिक, व्हाई नॉट द सेविंग्स ऑफ हाउस बी मेड सिप बाय सिप, राइट? अक्सर हम में से लोग होम लोन लेते हैं. हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम लोग होम लोन लेते हैं और 25 साल तक होम लोन चुकाते रहते हैं, 20 साल तक चुकाते रहते हैं. अगर दोस्तों आप लोग ने SIP की होती तो शायद 10-15 साल में आपके पास इतने पैसे जमा हो जाते कि आपकी वो लोन लेने की जरूरत नहीं है, आप इंस्टेंटली बाई कर सकते थे, राइट? एंड फाइनली यू वांट टू बाय योर ड्रीम कार. अगेन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 10,000 और 20,000 SIP एवरी मंथ. 5 साल 7 साल कीजिए, यू कैन बाय योर ड्रीम कार ऑल्सो, राइट? सो नो गोल इज टू बिग कि वो अचीव नहीं हो सके.
एंड बागबान में आपने देखा है, you cannot depend on your family. Today I was talking about independence. Have we really achieved financial freedom? हमने financial independence लिया है कि नहीं? And that is why the first thing that you have to do is plan for yourself when you'll be 30 years from now. Okay? हम अक्सर क्यों प्लान नहीं कर पाते हैं दोस्तों? Because we are not able to visualize this version of ourselves. हम कभी ये वर्जन नहीं सोच पाते हैं, देख नहीं पाते हैं. लकीली आजकल के ऐप आगे जो आपको दिखा देते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा दिखेगा, राइट? एंड दिस इज ट्रू, ये होना है. सो मैंने क्या किया, आई एम 42, 55 में अगर मुझे रिटायरमेंट लेना है सपोज, एंड टिल 85 इज माई लाइफ एक्सपेक्टेंसी. आज के मेरे अगर खर्चे 2 लाख रुपए हैं तो आज 2 लाख है दोस्तों, बट महंगाई 8% के हिसाब से ये 2 लाख नहीं रहेंगे. इट विल बिकम 5.5 lakhs इन 13 years टाइम, द सेम एक्सपेंसेस. और अगर मुझे 85 तक पैसे चाहिए एंड आई डोंट वांट टू डिपेंड ऑन एनीवन, आई नीड अ कॉर्पस ऑफ ऑलमोस्ट 10 crores. 10 crore मुझे रिटायरमेंट चाहिए. बहुत बार मैं लोगों से सुनता हूँ, अरे मेरे पास 1 करोड़ हो जाएगा तो काफी है. ये रैंडम एक्सरसाइज करके मतलब नहीं है. यू हैव टू डू अ रियल कैलकुलेटर, राइट? देन यू नो कि 9 करोड़ करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. ये तो आप हर महीने SIP करो 2 लाख रुपए की, then you will be able to reach 9.6 crores and that will give you 5 lakhs starting at the age of 55. If you have lump sum today of 1.5 crore rupees और आपने वो पैसे लगा दिए, assuming that is earning you 15%, assuming there's no guarantee in any of this, this might become 10 crore and you will hit and you'll be able to get your monthly. And this is how your retirement life would look like. At 56 आपको कितना मिलेगा? 5.5 lakh per month. 60 में आपको 7 लाख रुपए मिलेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टेड. 70 में आपको 12 लाख रुपए मिलेंगे. और सपोज 75 में आपको कुछ हो जाता है, राइट? योर नॉमिनी गेट्स द रिमेनिंग अमाउंट, जो भी आपके नॉमिनी है. एंड इफ यू सर्वाइव टिल 85, दिस इज द लास्ट यू विल बी विथड्रॉइंग. आफ्टर दैट द कॉर्पस वुड हैव बिकम जीरो, राइट? दिस इज माय रिटायरमेंट प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट 30 years. एंड दिस इज माय बिगेस्ट लॉन्ग टर्म गोल एंड माय मोस्ट इंपॉर्टेंट, इवन मोर इंपॉर्टेंट देन चाइल्ड्स एजुकेशन. क्योंकि रिटायरमेंट एक ऐसा गोल है जिसमें कोई लोन नहीं मिलता है, जिसमें आपके यार दोस्त फ्रेंड्स फैमिली कोई काम नहीं आएंगे. आपका पैसा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी. एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस सेविंग्स आप सर उठा के जी पाएंगे, राइट? माय नेक्स्ट बिग गोल वाज टू बाय अ रोल्स रॉयस कार, बिकॉज इन दैट मूवी वन इडियट दैट बॉय एंड्स अप बाइंग अ रोल्स रॉयस कार, राइट? सो ये गाड़ी 10 साल पहले मैंने जब देखी, 8 करोड़ की गाड़ी थी. ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर मी टू थिंक अबाउट इट, बट मैंने सोचा कि कोशिश करके देखते हैं. एंड 8 करोड़ की गाड़ी अगर मुझे खरीदनी है 15 सालों में, आई वाज 35, द आइडिया वाज टू बाय बिफोर माय 50th बर्थडे. उस वक्त इसका दाम हो जाएगा 16 करोड़ रुपए बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. 16 करोड़ की गाड़ी अगर 15 साल में खरीदनी है तो 2 लाख रुपए की SIP मुझे करनी पड़ेगी. 2 लाख ओनली टू बाय योर ड्रीम कार फॉर नेक्स्ट 15 years, राइट? एंड दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर लास्ट मेनी years. And I'm sure keep, I'll be able to buy this hopefully sooner than later. The aim is to buy in next 2-3 years. And ये गाड़ी मेरे खुद के चलाने के लिए नहीं है. ये गाड़ी is for anybody. This is what I said. A wealthy man driving a Mercedes Benz. There are 1 million views on YouTube. A wealthy man showing how to plan your investments. There are only 200. लोगों को मतलब नहीं है पैसे कैसे हैं, लोगों को मतलब है ये गाड़ी कैसे है. So my idea, and Ashish wrote, educate while driving Mercedes. I think that is what I want to do. कि जब ये गाड़ी आ जाएगी, you are most invited to come and sit in the car, right? And if that can inspire you, I think my job is done. ये शायद 1 घंटे का लेक्चर आपको इंस्पायर नहीं कर पाए और वहाँ 10 मिनट की Rolls Royce ride might change your life, right? So that is the whole idea of buying this thing. My other goal. So आपने देखा मैंने रिटायरमेंट प्लानिंग की, मैंने बच्चों की मैंने गाड़ी की प्लानिंग की. I have 2 children. I've been planning for them for their education and marriage. 10,000 रुपए SIP 25 साल अगर मैं करता हूँ, assuming I earn 15% return, right? Then she might get around 3.28 crores, right? This is what I've been doing. बहुत सालों से मैं कर रहा हूँ. एंड आपको मैं एक छोटा सा चीज इसमें दिखाना चाहता हूँ. You will be able to see कि इसका real result क्या हुआ है. So this is what I want to show you. My daughter was born on 24 December 2010. 10,000 रुपए की SIP मैंने उसके लिए चालू की थी. 1 महीने बाद उसका नेमिंग सेरेमनी थी. 50,000 और 70,000 उसको गिफ्ट्स मिले थे फ्रॉम दादा दादी नाना नानी. I thought this was her money, let me not touch this. और मैं डालते गया. एंड करते करते आप देख रहे हैं
21/10/2014 को धनतेरस था, दिवाली, दिन अच्छा था, लोग सोना खरीदते हैं. I decided to invest in the same place. 24 December, 14 December, 24 December was her birthday. Again she got gift. I decided to put it in here. और आज मुझे बताते हुए बहुत प्राउड फीलिंग हो रही है. Today she's 12.5. I've invested around 16.95 and the corpus is almost 51 lakhs. Okay, look at the power of this game. And I told you she'll get around 3.28 crores, you know, when she turns 25. उस वक्त कोई भी दुनिया की एजुकेशन में जाना हो, I don't have to depend on loan or anything else. This is her money. And same for her marriage. At 30, she'll get approximately 7 crore for her marriage. Again, it is her choice what kind of marriage she wants to do. So this is the power of planning. आपने देखा है, this is what, you know, a right planning can do to you, right? And finally, मैंने उसमें बताया था SWP, why to create a passive income, right? Again, this is a real example I'm giving you. There is no guarantee कि ये होएगा कि नहीं होएगा, but just to give you a thought, right? SIP is systematic investment planning, SWP is systematic withdrawal planning, right? जो आपने corpus बनाया, अब उसको enjoy करने का time आ गया है. So you created this piggy bank and now the time has come to put a tap around this and get money for lifetime. Let me give you this real example. Suppose we would have met 20 years, 25 years back. And आप बोलते मिस्टर कोठारी, I have only 1 crore rupees. ये I am 55, 60 now. मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत ही 1 करोड़ रुपए है. Can you invest in such a way that I get 1 lakh rupees a month? Okay? यानी 12 लाख रुपए महीने के, साल के, यानी 12% on your corpus. I said ठीक है, let's start. So we would have started this in 96. Why I've taken 96? Because this fund was there in 96. काफी history है. And this is one of the oldest mutual fund in the country, a diversified fund, HDFC Top 100 fund. अभी नाम उसका तो change हो गया है. The fund still remains. और ये 2023 की बात है, 2 महीने पहले तक की. हमने पिछले 27 सालों में friends 319 monthly installments withdraw किए हैं. Each installment worth 1 lakh. So आपने अब तक मिला के 3 crore 19 lakhs is what you withdrawn, right? And guys, you invested 1 CR, you have already got back 3 crore 19 lakhs. Today, shockingly, surprisingly, you are sitting on a corpus of 23 crore 14 lakh, even after withdrawing 3 crore 19 lakh for the last 27 years, right? This is almost impossible to believe. Now, why this is possible? Because friends, your withdrawal was at the rate of 12%. ये जो withdrawal rate था 12, but your investment for the last 27 years has given you 18% compounded return. That 6% differential जो आपने नहीं निकाला, this is what it has made 23 crore today, even after withdrawing. This is the power of SWP. Let me show you another thing. A real little change. आपने बोला मिस्टर कोठारी, ये 1 लाख रुपए 96 में तो ठीक है, but महंगाई भी है. 10 साल बाद 1 लाख रुपए की क्या वैल्यू होगी? Can you give me such a way that every year I get 5% extra? So next year I want 1,05,000 monthly, second year 1,10,000, and so on and so forth, right? So I said, ठीक है, let's start this same 1 crore, same 1 lakh, 96 to 2003, same 319 monthly installment, but this time, every time you are withdrawing extra, so 3 crore 19 lakh की जगह you have withdrawn 6 crore 38 lakh over the last 27 years. In spite of that, withdrawing this much from your 1 crore, today you are sitting on a corpus of 7 crore 11 lakh, right? I can today make an announcement, right? Just like in last 7 years, SIP has become a household name. In next 10 years, SWP will become a household thing. दुनिया में लोग बाकी जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस करते हैं कि मैंने रेंटल पे मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, उसको रेंट पे लगा दिया, मैंने एफडी की, उसमें से एफडी इनकम आ रही है. All those assets are very suboptimal choices. In the long term, nothing can beat the power of this SWP, right? Because इसमें आपके पास liquidity है, आपके पास high returns है, tax efficiency है, आपके पास पूरा control है. You can be anywhere in the world and you can change the SWP amount also, right? So very, very amazing way to create a passive income, you know, 10-20 साल बाद जब आपको जरूरत पड़ेगी. And finally, I come to the last part of my session, my journey from 0 to 100 crores. Nassim Nicholas Taleb says, never ask anyone for their opinion, forecast or recommendation. Just ask them what they have or don't have in their portfolio. बहुत कम आपको लोग experts मिलेंगे
जो आपको ऑनेस्टली शेयर करेंगे कि उन्होंने अपने पैसों के साथ क्या किया है, राइट? आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन दिस, स्किन इन द गेम। अदरवाइज ये लेक्चर 1 घंटे का कोई मतलब नहीं है अगर मैं आपको ये नहीं बताता हूँ कि मैंने मेरे पैसों के साथ क्या किया। सो करण दत्ता, वन ऑफ अ वेरी वेरी ग्रेट एक्सपर्ट इन आवर इंडस्ट्री, कुछ टाइम पहले उन्होंने ट्वीट निकाला था कि आई डोंट डू एनी ऑफ दीज। ना मैं क्रिप्टो करता हूँ, ना आईपीओ करता हूँ, ना एनएफओ करता हूँ, एनएफटी, एफएनओ, डे ट्रेडिंग कुछ नहीं करता। मेरा सारा पैसा लॉन्ग ओनली एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में है, एंड ही हैज अ पोर्टफोलियो ऑफ 20 स्टॉक्स, मी एंड माय पोर्टफोलियो। आई लाइक दिस। आई सेड मैं तो ये कुछ नहीं करता हूँ, इसके अलावा आई एम एन इडियट। ना मेरे पास कोई एलआईसीज है, एंडाउमेंट प्लान्स, यूलिप्स कुछ नहीं है। ना मेरे पास पीपीएफ है, ना मेरे पास घर है, which means I don't have a house today. I live in a rental house in Bombay. I don't have a car today, guys. I want to buy a Rolls Royce car, but आज की डेट में मेरे पास गाड़ी नहीं है। Rolls Royce इसलिए नहीं खरीदनी है कि मुझे गाड़ी की जरूरत है, Rolls Royce इसलिए खरीदनी है कि प्रूव करके दिखाना है कि गाड़ी आ सकती है। और ना मेरे पास गोल्ड है, ना डायरेक्ट स्टॉक्स में डालता हूँ, ना एफडी करता हूँ। मेरा सारा का सारा पैसा लॉन्ग ओनली एक्टिव म्यूचुअल फंड में, या couple of PMS scheme, which is also like mutual fund in some sense because they are like managed, vehicle, managed portfolios. तो मेरा सारा पैसा is managed by professional fund managers, and this is my journey, long and painful journey. This is a very powerful slide. ध्यान से देखिएगा। एंड ये स्लाइड इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सारी दुनिया, मैंने जो लोगों से मिला है, this is where people go wrong. My first 3 years मैंने 50 लाख रुपए डाल दिए थे। आफ्टर 3 years आई वाज सिटिंग ऑन -2 lakhs। मतलब 3 साल के बाद पैसे डालने के बाद, एसआईपी करने के बाद, आई वाज सिटिंग ऑन -3%, राइट? 99% लोग इस वक्त पैसा निकाल लेंगे। आई हैव सीन दैट 99%। इसीलिए 99% लोग वेल्थ नहीं बनाते हैं। मैंने कंटिन्यू किया 2010 से 2018 तक। ना जस्ट कंटिन्यू किया, मैं एसआईपी बढ़ाते गया। माय इन्वेस्टमेंट अमाउंट रीच ऑलमोस्ट 4 CR, the value of which became 6 CR. I was sitting on 2 crore profit. From -2 lakhs, guys, in the first 3 years to +2 crores in next 8 years is absolute sea change, right? And total return on the portfolio is around 18%. But मुझे मालूम था कि ये भी नीचे आएगा. Even these good times will not last there. 2 साल बाद कोविड हुआ, right? तब तक मैंने और SIP बढ़ा के और लमसम बढ़ा के मैंने लगभग 6 CR तक डाल दिया था. But if I tell you, after 10 years, I'm sitting less than the amount which I invested in mutual funds for the 10-year period. 10 साल में मेरा पैसा नेगेटिव दिखा रहा है। This is where all your patience will go haywire. आप बोलोगे I can't believe this. इस वक्त तो आप बता रहे थे कि शॉर्ट टर्म में ये होता है, बट लॉन्ग टर्म में अगर ये पैसा नहीं बनता है, मुझे इस पे कोई भरोसा नहीं है। And that is why you would have abandoned this. आपने इसमें नहीं किया होता, and you are sitting on -26 lakhs, -1%. Few of the people ने तो पैसा निकाल भी लिया था, right? कि ये सही चीज नहीं है, बट मेरे को पूरा विश्वास था कि ये वापस टर्न अराउंड होगा, बट मुझे पता नहीं था इतना जल्दी होगा। मुझे पता नहीं था कि नेक्स्ट 18 months में होगा। इन नेक्स्ट 18 months, -26 lakhs became a profit of 9 crore 22 lakhs. The portfolio value of 585 became 19 CR, and from -1%, it went all the way to become 19% on the total portfolio for the last 11 years, right? This is what patience rewards you. I tell investors, either we swim together or sink together. अगर आपका पैसा सिर्फ नीचे नहीं हुआ है, मेरा पैसा भी नीचे गया है, right? You have to have that belief, faith in this, and that is why I always tell this is a long and painful journey. ये रोलर कोस्टर राइड की तरह ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, बहुत टाइम आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, बट अगर आप डटे रहेंगे, आपको विक्ट्री मिलेगी। और ये क्लासिक एग्जांपल दिखाना चाहता हूं मैं आपको एसआईपी का। ये एसआईपी का मंत्र है, स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली, स्टे इन्वेस्टेड। आप बीच में मत उतरिए, राइट? एंड दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल व्हिच आई वांट टू शो यू। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल, दिस इज अ रियल एग्जांपल। 95 में ये फंड आया था। अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी करते, 10,000 रुपए की, तो आपने पहले साल 1,20,000 रुपए डाले, और 1 साल बाद आपकी इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए हो गई है, यानी 20,000 नुकसान। 90% लोग एसआईपी बंद कर देते हैं दोस्तों, ये 1 लाख का वैल्यू होते ही। दूसरे साल आपने 1,20,000 और डाले, 2,40,000। लुक एट द वैल्यू ऑफ 2,40,000, 175। बहुत कम लोग होते हैं जो इसको कंटिन्यू रखते हैं। तीसरे साल 360 डाले, अगेन नुकसान। लोग बोलेंगे अरे हर साल नुकसान ही नुकसान हो रहा है।
लेकिन जिसने चौथे साल पैसे कंटिन्यू कर लिए, लुक एट द गेम चेंजर, सीधा 6,19,000, 4,80,000 का, राइट? और आप यूं करते, और 5वें साल देखो, 5वें साल क्या होता है दोस्तों, आपने 6 लाख डाले, सीधा 6 लाख का 18 लाख हो गया। Markets always reward patient investors. Money moves from impatient to patient person, right? और ये मैं आपको तब बता रहा हूं जबकि लास्ट 20 सालों में एशियन क्राइसिस, पोखरण टेस्ट, कारगिल वॉर, .com बबल, 9/11 अटैक, ये सारी क्राइसिस होने के बाद, अगर मैं आपको बताता हूं पिछले 25 सालों में कोविड हो गया, यूक्रेन वॉर, रशिया, सब कुछ हो गया, आज 2022-23 में आपने जो 10,000 रुपए की एसआईपी की थी, आज उसकी वैल्यू अगर 12 करोड़ रुपए हो गई है, राइट? आफ्टर 26 years you are sitting on 12 crores rupees and your investment has earned 20% compounded return for the last so many years. In fact, आज का अगर आपको फिगर जानना है दोस्तों, that 10,000 SIP that you did, एक महीने पहले आपने कुल मिला के सिर्फ 34 लाख रुपए डाले हैं, your corpus is 13 crore 73 lakh, 13 crore. It is almost impossible to think about this, right? But ये possible हुआ है, and this is the game that very few people can play. You need confidence, but बहुत कम लोगों में ये हो पाता है, and this is what I try to do. That is why my third point was stay the course. बने रहिए, ऊपर नीचे जो होता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, just sit there, just hang around. And अगर कोविड में बहुत मार्केट नीचे गया है, be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. मैंने मेरे फैमिली के इन्वेस्टमेंट उस कोविड पीरियड में I ended up putting 86 lakhs rupees in that मार्च महीना, जब मार्केट्स एकदम नीचे थे, 35-40% डाउन, और आज वो पैसे 2 गुना 2.5 गुना बन गए, राइट? This is how market rewards you if you have a contra thinking. So this is what I've been doing with my money, as you can see here. बहुत सारे, अगर मैं आपको बोलूं 10 साल मैंने पैसे रखे थे, 10 years I kept my money, और 10 साल बाद मैं नुकसान में हूं. After 3,094 days I was at -1%. I have never seen any person in my life जिसने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू किया है. And today, after this thing, today that investment is showing 11% return. In fact, this is my worst investment in my entire portfolio for the last 11 years. But this worst investment has beaten FD hands down. इसीलिए मैं आपको बता रहा कि why PPF doesn't make any sense. आप कितने भी अनलकी रहो, you will be able to beat hands down, right, over a long term, right? And today, as we speak, this is where the portfolio stands, right? It's almost 30. क्योंकि कुछ पैसा मेरा एनपीएस में भी है, सब अगर मैं काउंट करूं तो it is around 30. Now I want to ask you a question. I'm just about to become 43 next month, right? 7 साल और है, ये मैंने अपने आप को चैलेंज किया था कि 50th बर्थडे पे करना है. Today this is around 30. Do you think अगले 7 साल में, and by the way 13 साल पहले this was 0, 13 years back. Do you think in next 7 years this has a potential to touch 100? Right? Many people are still doubtful, but look at the game. Look at the game of compounding. 30 will become 40 automatically, assuming 15%. Okay? And 40 will become 80. Your existing portfolio will become 80 by the time you turn 50. बाकी का 20 कहाँ से आएगा? Remember I told you I'm doing around 22 lakh का SIP every month. Assuming 15% growth, 7 साल और करता हूँ, this becomes almost 33 crores in next 7 years. 33 plus 18, 113, you become 1 idiot. I'm sure अब आपको ये गेम समझ में आया है. This is the game that I've been trying to play, and that is what I shared, Get Wealthy, right? So this is my life story. This is what 4 things you need to do to create the art of wealth creation, जो मैंने आपको बताया था, 0 to 100 crores. ये दिखने में बहुत easy है. People think, okay, I got 20% returns from my portfolio for last 13 years. People think free money. No, guys, I paid 20 years of patience, 5 calendar years of negative returns, 6 years of no returns. मार्केट में सब लोग चाहते हैं हर साल 1+1+1+1+7 मिले, बट मार्केट ऐसा नहीं देता है. मार्केट देता है 1, 2, 4, -3, -2, 0, 5, और बराबर आप एवरेज 7 आता है. So when I say average return, you can expect 10, 12%. It is not every year. And remember one thing, guys, markets will not give the returns that you want. Markets will give the returns that you deserve. Okay? And good investing is not necessarily about earning the highest returns, because the highest returns tend to be one-off hits that can't be repeated. It's about earning pretty good returns that you can stick with and which can be repeated for the longest period of time.
that's when compounding runs wide. जब 50 का हो जाऊंगा, 100 crore हो जाएंगे, मुझे ₹1 भी नहीं निकालना है. My allocation will remain like this. जब जब मुझे जरूरत होगी तब तक पैसा निकालूंगा. Otherwise, till my lifetime, I'll continue to remain invested. 10-12% रिटर्न मिले, I'm happy. 14% आया तो बोनस है, right? But this is when compounding will run wild, right? So when Sehwag, after a lean patch of 15 matches, asked Sachin at the crease, runs नहीं बन रहे हैं. The God said, your parents are watching you on TV. Just show your face for an hour to them. 2 घंटा चेहरा दिखा दो, 1 घंटा चेहरा दिखा दो अपने पेरेंट्स को. और आप लोग जानते हो ना कि सहवाग अगर 1 घंटा पिच पे टिक गया तो क्या होगा फिर? और वही हुआ. He respected, his wicket. Runs started flowing. इन्वेस्टिंग में भी आप बने रहिए दोस्तों. खाली गुड टाइम्स, बैड टाइम्स, जब जरूरत है तब पैसा निकालना है. बट 10 साल तक एटलीस्ट आप अगर बने रह सकते हैं, you will see good returns. एक और बात, it takes 20 years to build wealth, right? But problem क्या है दोस्तों? It takes 25 years to know it takes 20 years to build wealth. ये realization 25 साल बाद आता है. हम सारी गलतियां कर लेते हैं, उसके बाद आता है कि नहीं, wealth तो simple तरीके से बन सकती है. So the learnings from my portfolio has been, it's a very boring game. My favorite holding period is forever. जितना कम चर्निंग करोगे उतना ज्यादा रिटर्न बनेगा, बिकॉज जब आप चर्निंग करोगे तब तक आप टैक्स भर रहे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. मैंने अभी तक लास्ट 10 सालों में मैंने चर्न नहीं किया तो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई टैक्स नहीं दिया, राइट? एंड फाइनली देखिए, आपके पास अगर 4-5 म्यूचुअल फंड्स है, 7-8 हैं, कुछ परफॉर्म करेंगे, कुछ नहीं करेंगे. डोंट चेज द परफॉर्मेंस, रिसेंट परफॉर्मर्स जो लास्ट 1 साल में टॉप किया है, जो लास्ट 3 साल में टॉप किया है. मोस्ट पीपल एंड अप डूइंग द मिस्टेक. ऑन द कॉन्ट्री, जो लास्ट 1-3 साल में खराब किया है, आप वहां डालोगे, most likely you will make good returns in the next 3-5 years. And finally, if you are convinced with the idea, back it up with truckload. मेरा सारा पैसा दोस्तों यहीं जाता है because I'm superbly convinced with this idea. I've been into this industry for 19 years. उतार चढ़ाव सब कुछ देख लिया है. And today I'm convinced कि जितना simple रखोगे, जितना easy रखोगे, that is how you'll win the game. The real power of compounding will kick in now. 0 to 30 आने में 13 साल लगे, पर 30 to 113 7 साल में हो जाएंगे, right? Most people can't make wealth in this industry because 51% people stop their SIPs in 1 year. Another 25% people stop the investments in 2 years. Another 13% people stop in 3 years. How many people are able to keep the investments beyond 5 years? 2.5% low. And that is why these 2%, 1% people in the world create wealth, right? It's simple but not easy. क्योंकि I tell my investors, जब आप ये जर्नी में आ रहे हो ना, ये ब्लू लाइन आपने पैसे डाले हैं और ग्रीन लाइन इज द मार्केट वैल्यू. पहले 5 साल आपकी कुछ वेल्थ नहीं बनेगी. फर्स्ट 5 years यू विल नॉट क्रिएट एनी वेल्थ. ओके, ये देखिए, ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन सेम है. यहाँ ब्रेकआउट शुरू होता है, धीरे धीरे डिफरेंस नजर आता है. और कई बार लाइफ में ऐसे पल आते हैं, कोविड जैसा, कि आपकी सारी मेहनत 10 साल बाद भी बराबर हो जाती है, राइट? दिस इज व्हाट हैपेंड विथ मी. बट इफ यू कैन रिमेन पेशेंट, इफ यू कैन हैव पेशेंस और आप कंटिन्यू करते हो, तो लुक एट द जर्नी, द गैप बिटवीन, ये कोविड का मोमेंट था, and look at the journey today, the gap between green line and blue line is the highest. So don't expect anything will happen in the first 5-7 years. The magic starts to happen after 7, 8, 9, 10 years. Okay, so in next 2 minutes we are about to close. My buying mantra is very simple, friends. 80-90% of my money goes in this buy, which is SIP. Okay, इसमें से आपको लगभग 12 से 15% का रिटर्न्स ओवर ए लॉन्ग टर्म आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द स्कीम, फंड, कैटेगरी दैट यू चोजन. अगर आपको 15 to 18 बनाने हैं, 2-3% एक्स्ट्रा बनाने हैं, वो कहां से आते हैं? You make 12 to 14% returns in equity over long periods of time through monthly SIP. 16 to 18% is made when you buy the dips and show courage. अगर आपने कोविड के टाइम पे बहुत पैसे डाले होते, राइट, तो आपको एक्स्ट्रा 2-3% आ जाते. This 3 to 5% extra return over long periods creates a difference of 3 to 5 times in overall corpus. ये जो 2% जो एक्स्ट्रा दिख रहे हैं ना, ये इसको कम मत समझना आप. 20 साल में इतने बड़े कॉर्पस पे इट कैन रिजल्ट इनटू 2 to 3 times मोर, डबल और ट्रिपल द कॉर्पस. पर प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो लर्निंग है ना, ये आपको 15 साल मार्केट्स में रहने के बाद आती है, राइट? ये मुझे भी 15-20 साल बाद समझ में आया ये. सो दिस हैज बीन माय मंत्रा, व्हिच इज व्हाट आई टोल्ड यू, एंड दिस इज इन द चार्ट फ्रॉम माय फ्रेंड विशाल खंडेलवाल, somebody who has created wealth in the same manner. He says, try to save more than you can spend. धीरे धीरे आप डालना चालू करो. First 10 years you will see nothing. Power of compounding will start after 10 years, and that is when you will see the wealth creation effect, right?
I'm sure many of you might be listening, सोच रहे होते कि काश ये सेमिनार 20 साल पहले अटेंड किए होते. The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. Unfortunately, ये बोलना बहुत आसान होता है, पर प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल होता है. Because only 1% people can be without debt. 1% can invest for long term. कितना भी ज्ञान दे दें, कितने भी सेमिनार हो जाए, only 1% people will be able to invest for long term. 1% people can delay gratification. 1% people can develop patience. 1% people can undergo pain and sacrifice. I told you it requires you to undergo a lot of pain and sacrifice. बहुत सारे टाइम ऐसे आएंगे जब you would like to give up, and that is why only 1% people can achieve financial independence, right? हालांकि हम सब चाहते हैं कि in next 25 years entire India can become independent, but it is not true. 1000 साल पहले भी 1% लोग independent थे, financially independent थे, आज भी 1% है, और 1000 साल बाद भी unfortunately only 1 to 2% people will become financially independent, because human nature doesn't change, right? It is very difficult to change. So this is the reality, this is the truth. But you have to know that if you don't find a way to make money while you sleep, you will have to work until you die, right? फिर आपको चाहे सैटरडे हो चाहे संडे हो, आपको काम करना पड़ेगा. You can't be able to afford to retire if you have not allowed your money to work right now. और अगर आपको इतनी वेल्थ बनानी है, इतनी बड़ी वेल्थ बनानी है, guys, you have to keep your formula very simple. जितना आप कॉम्प्लिकेट करने जाओगे, उतना वेल्थ नहीं बनेगा. There are smart people, intelligent people, brilliant people, genius, and then simple. It's very difficult to find simple people, simple strategies, right? Swami Vivekananda said, take up one idea, make that idea your life, think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success. 10 साल पहले, 12 साल पहले मैंने ये आइडिया दिमाग में डाली थी कि मुझे 100 बनना है. Coming from a middle class background, I wanted to achieve 100 crores corpus just to prove the world it is possible. This movie, One Idiot, 30-minute movie, changed my life. I went to Amol Gupte, जिन्होंने ये मूवी बनाई थी, उन्होंने तारे ज़मीं पर बनाई है. I went to him and I promised him, sir, you made a real idiot. One day this real idiot will come to you and show you account statement of 100 crores कि सर मैंने सारा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके ये वेल्थ बनाई है, and just to show the world कि is possible. Because the most powerful story in the world is the one you tell yourself, right? आप अपने आप से झूठ नहीं बोलोगे. So you have to have your own story for you to get started. And finally, I would like to stop here by this wonderful slide from my guru, Mr. Nick Murray. He says the messenger is the message, right? So through my story, can I try to give the message, is what I intended to do today. With this, I would like to stop my presentation here, and I would like to take a few questions. I'm very extremely sorry. I've already shot by 20 minutes. I hope it has been an awesome Sunday for you in terms of learning. जिनको अभी जाना है, you can kind of move out. There are few people who I would take the questions, because it's important to take the questions. कुछ. So let me just pick the question from chat box. You can write your question in the chat box. If you have any questions. So I'll try to answer. Okay. Somebody says LIC versus SIP. Pushkar ji, I would say when it comes to insurance, just take a term plan from any company, whether it is LIC or any company. Stick to only term plan. Don't go for any other endowment plan or ULIP plan. I don't believe in those plans. My experience tells me over a long term SIP mutual funds does the best thing. Okay, so this is my opinion on this. How is PMS and it is safe? How do we select a PMS scheme? Prashant ji, again, I'm not a very big believer of PMS somehow, because unfortunately PMS is also like a mutual fund. वहाँ पे भी 40-50 stocks होते हैं, but मैंने ये देखा है कि PMS में charges थोड़ी ज़्यादा होते हैं. It's not very tax friendly, right? तो 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैंने रियलाइज किया है कि म्यूचुअल फंड इज अ बेटर व्हीकल. मेरा खुद का 95% ऑफ माय मनी इज इन म्यूचुअल फंड. 5% मैंने कुछ सेलेक्ट पीएमएस में डाले जहां पे मुझे मेरा एक्सपेक्टेशन अलग है. आई हैव गॉन फॉर वेरी हाई रिस्क थिंग. एंड बाय द वे, वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर. I showed you my portfolio. My portfolio is very aggressive portfolio. Okay, it's very high risky portfolio. I would not recommend this kind of a portfolio, because मैं 10 साल बैठ सकता हूँ,
not many of you might be able to sit for 10 years, without any returns. So please speak to your distributor advisor, whosoever you kind of, get your advice, and plan accordingly. Is it okay? Somebody has asked, I've started using Scriptbox for investing SIP in mutual funds, or should I search for a reliable distributor, which is near to impossible at times? Mr. Bora, I agree with you. See, finding a good distributor or an advisor is like finding a good doctor, right? How do you do it? Maybe like, by friends and family, say aap lete ho, word of mouth. You have to find a good advisor until you find it out. You have to keep trying. जैसे डॉक्टर, हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं समझ में आता, दूसरे के पास जाते हैं, तीसरे के पास जाते हैं, और फाइनली एक डॉक्टर हमें समझ में आता है, राइट? कहीं ना कहीं आपको भरोसा रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा. I hope someday you will find a good distributor or advisor too. Which one is allowed? What is better for investment, buying property or MF? Mr. Tushar, unfortunately, I have a very different view here. I have not been a big believer of property. Of course, see, every asset class gives you good returns, right? अगर आपने property बहुत उस टाइम पे खरीदी जब वो एकदम खराब कर रही थी, when nobody was like 2012 to 2020, properties were not doing very well. उस वक्त अगर आपने property खरीदी होती 2018-19 at a low rate, then of course you might have made more returns in property. So any asset class that you buy at bottom or near bottom, and if you're able to sell at peak, that is when you make the highest returns. But properties, I find it very difficult to understand. Time, बहुत मुश्किल होता है. What they promise and what they deliver is very different. मुझे ये safe लगता है, मुझे ये control लगता है. I can control from anywhere I can want. I can understand this very well. But again, this is my personal opinion. अगर आपको वहां समझ में आता है, you can try your hand there. Okay, Scriptbox. Yes, Scriptbox is very safe because it's a platform. It's an online platform. All the investments are in your name, right? Mutual fund में एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ, friends. It is very tightly regulated. आपको डरने की जरूरत आपको नहीं है. खाली make sure किया कीजिए कि your email IDs and mobile number are registered wherever you invest. You should never give any other email IDs to anybody, right? Don't go with free advice. Yes, देखो friends, everything in life has a cost. If you think you are getting for free, guys, remember you are the product then. Okay, कुछ भी free नहीं है. In my case, I'm Tej says, in my case, I invested with help of a person who is about 74 years. He handled my portfolio. So is this okay? Should I go to see? As long as you trust that person, as long as you have had a good experience, I wouldn't recommend switching. Okay, of course you can have somebody as a standby, right? You can find and keep that person as a standby. कि अगर in your existing distributor advisor को कुछ हो जाए, then you need a continuity, right? Deep Shetty says, how do you allocate your fund? Deep, my portfolio is mostly in very aggressive funds, as I told you, which I don't recommend to anybody. मेरा सारा पैसा equity funds में है, mid and small cap में ज़्यादा है. एक slide मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, right? I think this is worth sharing to people. This is very, very important slide. Look at this slide. I told you this is my portfolio. Yes, this was my first SIP that I started. I bought 5,000 और 17 रुपए की NAV पे मैंने खरीदना चालू किया था, 17 rupees. You can see this. Now look at this. एक साल डालने के बाद उसकी NAV आ गई थी 13 रुपए, राइट? 6 महीने बाद 13 रुपए आ गई थी. मैं डालते गया. एक साल बाद उसकी NAV 12 रुपए आ गई थी. 17 से 12 रुपए. First, 90% people will stop their SIPs in 1 year time. I can guarantee you. मैं कंटिन्यू करते गया. 2013 में, if I tell you, the NAV came down to 13 rupees again. After 3 years, nobody will continue. 99% of the people will stop their SIP, right? और today, आज मुझे 13 साल हो गए friends, 13 रुपए में 12 रुपए में जो खरीदा, आज उसकी वैल्यू दिखा रही है 140 rupees today per unit. 10x of what I put. जो मैंने 5-5 हजार डाले हैं, आज उसकी वैल्यू 50 हजार रुपए हो गई है per installment. Imagine if I keep for next 10-12 years and assuming it goes further 10x from here, each 5,000 will be worth 5 lakh rupees each installment. और imagine कीजिए, आज मैं 22 लाख रुपए SIP कर रहा हूं, तो 10-20 साल बाद वो एक installment क्या वैल्यू होगा? Are you able to understand the game that we are playing now? ये 20 साल पहले मुझसे आप पूछते, 15 साल पहले, I would have never been able to believe this, right? And today look at this, the 7,80,000 that I put, okay, in small cap has today become 33 lakh, right? And it is like 20-25% CAGR. और मैंने आपको जो टैक्स सेविंग बताया था, मैंने कभी भी PPF में नहीं डाला.
जो 7,80,000 जो मैं 10-13 साल से डाल रहा हूँ, that has become today 23 lakhs and my return is around 18%, 16, 17, 18%, right? Whereas PPF gives 7%. Why should I put my money in PPF? Of course, this 18% has gone to 10%, 12%, 5%, but it's okay. I'm here for long term, Sanjay says, yes, you will only get down when you reach your destination. I agree. I will not withdraw until I remember. NPS is a good option, KKR. All of us should do 50,000 rupees NPS, right? What happens if market trend goes down at the end of 50? कोई फर्क नहीं पड़ता है. 50 में नहीं होगा, 100 crores 51 में हो जाएगा. How does it really matter? See, some things are not in your hands. Some things are not controllable, right? So उसको आप छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, right? Okay. So that is there. Then next question I want to take. Home loan, Girish, again, yes, home loan is not bad. Again, most people just go for the tax angle, right? I believe tax is secondary. Tax to aaj hai, kal nahi rahega, to fir hum kya karenge, right? So, don't take your decisions based on this thing. We'll take 10 more, we'll discuss 10 more minutes because, and then we'll stop. So 12:30 already ho gaya hai. Is switching MFs a good idea or stick to MFs and don't withdraw for life? Friends, I would not recommend switching, 90% of the time. 90% of the time आपको कुछ नहीं करना है. 10% of the time शायद कोई फंड बहुत ज्यादा खराब कर रहा है, ये फंड हाउस बहुत खराब कर रहा है, ये मार्केट्स बहुत ज्यादा पीक पे आ गए हैं. Maybe those times you can do it, but again it's better to consult somebody. Okay. Birendra Narayan says at age 45 I will have worth of 40 lakhs, 60. How will my worth with average this thing? Birendra Narayan, you can do online calculations. There are a lot of online calculators you can go, or I would say talk to your distributor or advisor. I think that will be best. Ajit, I'm doing 50,000 SIP since last 6 years. Superb. I'm sure, Ajit, you would have a great experience in the last 6 years. What will be the total value after 20 years? Again, go online, search for SIP calculator, put it at 12%, just think and just see how much it will come, right? This will be fantastic. Do you run a blog? No, Srinivasan. Actually, I don't run any of these things, because I mean, जो story थी मैंने आपको यहाँ बता दी. I don't think there is anything further to share. Mayank, PPF is tax free, MF is taxable, but Mayank, अगर आप 15% रिटर्न कमा रहे हो या 12% कमा रहे हो, उसमें 10% टैक्स दिया तो भी PPF को बीट कर रहा है. I think this tax element, we should really remove it. This is not a big decision maker or breaker, right? So what is your advice for 60-year-old person, Rajesh? Rajesh, very simple. Frankly, age do not matter. As long as Warren Buffett has 90K and still his entire money is in equity, as long as you don't need money and if you have the patience to go through the ups and downs, you can be in equity also, or you can have a hybrid. But I would say, speak to your advisor or distributor. I think he would be the right person to understand you and then guide you. What's the benefit of keeping in debt fund? Naina, the benefit is that in the short term, equity markets can be crazy. It can be very volatile. 1 साल, 2 साल, 3 साल का जो पैसा होता है ना, I usually say put in debt. आपको 7-8% मिल रहा है, you should be happy with that. Don't go for equity. Only money that is beyond 3 years, you should start adding equity then, right? SWP में क्या होगा अगर 15 साल के SWP में मार्केट लास्ट 15th ईयर मार्केट बहुत डाउन हो गया? सर, when you're withdrawing in SWP, you're withdrawing every month small amount. So even if the market is down, you are not really very much affected. Okay, so it doesn't really. और मैंने आपको जो एग्जांपल दिखाया था वो एक फंड का जो 25 साल हो गए, सर बहुत बार मार्केट नीचे और ऊपर गए हैं, right? So it doesn't really matter much. How do you look mutual fund industry in the coming 10 to 15 years at current? Rohan, if you think market is very high today, wait for 10 years. You would have realized that you missed the entire game. As I told you, अगर हम 12% का भी रिटर्न पकड़े सेंसेक्स पे, today Sensex is around 60-70,000. At 12%, markets double 6 years. So in 12 years, markets can grow by 4x. So 60,000 can become 240,000 also. Plus minus 1 or 2 years. So as long as the economy is doing good, India is doing good, markets will do good over a period of time, right? So don't worry on that front. Particularly, I believe next 10 years are very golden decade for our country. We are going to see
an amazing kind of boom in everything because of the young demographics, population, technology, everything, right? How can we convince clients to choose advisor than direct? Kumar, you don't have to convince, I mean, if you show what you have been doing with your own portfolio, if they're interested, if they want to come to you, it's okay. Otherwise, you will find a lot of other people, Can Pawanji ask, can SIP start on the name of kids? Yes, you should start SIP in the name of kids for the simple reason, जब हम बच्चों के नाम पे पैसा डालते हैं ना, we are emotionally connected. Then we will not withdraw this money for our business purpose or anything. If you're putting in your name, then any point of time आपको पैसे की जरूरत होगी and you'll withdraw, right? So please put this thing. Do you do portfolio analysis and rebalancing? Smita, a very honest thing I want to tell you, though I'm an advisor, though I'm so-called expert in the market, but in the last 13 years, I have never tried to apply my mind in investing. मैंने डाल दिया और भूल गया, I never try to tinker. Yes, जिस वक्त डालने जाता हूँ उस वक्त थोड़ा दिमाग लगाता हूँ कि कहाँ डालना है, but एक बार जब डाल दिया उसको change नहीं करता हूँ. Good, bad, ugly, I remain there. I don't churn as much, and and that's why I hardly do portfolio analysis and rebalancing. 95% of the time, I am just buy and hold investor. Ratnesh asking formula for equity exposure. Ratnesh ji, there is no one formula for equity exposure. There are people who can be 100% equity. There are people who don't want any equity. And there are people who are 50-50 also equity. Sandesh Shetty asks, we are earning 15 to 16% in MF. Withdrawal time, we need to pay 10% tax. Yes. At the time of withdrawal, you'll have to, as per current regulations, you'll have to pay 10% tax. But you should not mind. See, I think one biggest myth we all have is tax bharna. Guys, I can tell you, today, you would have seen from my portfolio, the SIP that I'm doing and the kind of money I'm earning, I come in only 1.1 lakh people who paid taxes who filed income of 1 CR. And I feel proud of that. Okay. Ki I come in that because agar aap, Bhagwan ne aapko has given you the privilege to earn money or aap earn kar rahe ho, tabhi aap tax bhar rahe ho. I wish all of you also pay huge taxes because you will only pay taxes when you earn a lot of money. Right? So मेरी wish है कि आप लोग बहुत पैसा कमाएं और तब आप बहुत tax भरें, which will help our country to grow. So never ever worry on the tax front, right? Always thinking कि मैं income कैसे बढ़ाऊं. Karegaonkar says, I'm farmer, my age 38 years, my saving 10 lakh. How I invest in mutual fund? Karegaonkar would suggest find a distributor, a good advisor in your town, in your area, or whatever online, but don't try to do yourself. I've seen a lot of people making this mistake. I told you investing looks simple, but it is not easy. और आप 4-5 साल में एक गलती कर जाओगे ना तो आपका सारा रिटर्न जो है बराबर हो जाएगा जो आपने मेहनत की है. ओके. कैन वी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड के अलावा दूसरे स्कीम में बच्चों के नाम पे आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं मिस्टर भगवान. जरूरी नहीं है चिल्ड्रन गिफ्ट फंड में, बट चिल्ड्रन गिफ्ट फंड आर आल्सो गुड फंड्स. दे हैव हैड अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड, तो आप कर सकते हैं. Sandeep asks, what is the difference between direct mutual fund and regular mutual fund? Good question, Sandeep. There are two kinds of mutual funds or schemes: direct plan, regular plan. Direct plan are meant for those investors who, we assume that they know everything. They don't need the help of a distributor, and they can take their own decisions and invest on their own, right? So, अगर 2% cost होता है और 1% distributor को जाता है, तो in direct plan the cost is 1%, right? बट इफ यू थिंक ये सब आप नहीं कर सकते हो, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास समय नहीं है, नॉलेज नहीं है, टेक द हेल्प ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर हु विल हेल्प यू विथ एवरीथिंग, एंड वो 1% आप जो यहाँ बचा रहे थे, द रियल वैल्यू ऑफ अ गुड डिस्ट्रीब्यूटर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन बी 4-5%, राइट? एंड और आप शांति की नींद सो सकते हो. So choose what is good for yourself actually. Okay. I think we're just about to end next 3 minutes. What is the difference between NFO and mutual fund? Sandesh, both are same. New fund offer is the fund which is coming to the market for the first time, right? इसलिए वो starting में खुलता है, but ऐसा कोई advantage नहीं है कि आपने NFO में डाला तो पैसा बनेगा. Usually we try avoiding NFOs. हम लोग जब एक बार fund आ जाता है, जब हम लोग I like to invest in those funds which has a long vintage. जैसे HDFC fund बताया मैंने, ये फ्लेक्सी किया 27 साल से ये फंड है. I would have more confidence investing in the same fund rather than going in a new fund because there is no history to that, right?
So that is my view. Then what is your take? What is your take on investing in small cases? Samuel, I'm not a very big believer of small cases because I've realized the charges in small cases are very high. Okay. Again, there are hundreds and thousands of portfolios. You get very confused. I'm not very convinced, on this. I think I have covered almost everything. If I missed, just type on the chat box, because a lot of Q&As have happened. And should we go for top up or buy new MF? Dayananji, if you have 4 to 5 funds, just stick to those 4 to 5 funds. You anyway good diversified आपने कर लिया है. अभी आप fund add करोगे तो और diversification नहीं होगा. Just go for top up in the same existing funds. This is my view. Do we have to show the SIP returns as income in yearly IT return and pay the tax? No, Mr. Rai. That is the beauty of mutual funds. 10 साल तक अगर आपने नहीं निकाला, 15 साल तक नहीं निकाला, you don't have to declare that income or you don't have to pay tax. Only when you withdraw money in that year on that portion of capital gain, you have to pay tax. Right? What is the difference between ULIP and mutual fund? Both are very similar in terms of portfolio management. The only challenge in ULIP is, it's a 5-year lock-in. Sometimes the charges can be very high. Okay, nowadays, of course, ULIP charges have also come down. But, I might have a bias, okay? But I believe, mutual funds have been able to manage the portfolios much better because they are more transparent. Sari media ki nazar un pe rehti hai. The regulator is very tight about this. I would have more comfort in putting through mutual funds. Okay, again, my personal opinion, this one. What should be your allocation between MF, gold, bonds, NPS, and PF? Very good question, Edwin. Look, gold bonds are a very good way. Sovereign gold bonds are a very good way to invest money if you are if you want to invest gold. And I believe that maybe 10% of your money should be in gold. Over a long term in sovereign gold bonds, you can expect to earn 8 to 10% returns, okay, which is not bad, right? NPS, everybody must do. Apart, you get 50,000, आप जो करते हो उस पर tax benefits मिलता है आपको. And PF, again, I'm not a big believer of provident fund because वहाँ पे 8% tax free मिल रहा है और 8% से ऊपर बहुत सारी चीजों में मिल सकता है over a long term. Okay, though this is guaranteed and tax free, but I still not very convinced with PF. Should we use surplus to close home loan or invest in SIP? Purnima, this is a $1 billion question. There is no one answer to this, but I'll give you my take, okay? If you have been investing in mutual funds for a long term, and if you've seen 10-12% results in your portfolio, and if that gives you conviction, then I would not ask you to foreclose your loan or prepay early because you have seen the results with your own money, right? वहाँ पे आपको 7-8% में आपको benefit, you're paying loan, the cost of capital is 7-8%. You're getting tax benefits also. Then why let it continue? But अगर आपको रात को नींद नहीं आती है because you have a loan on your head, okay, and the cost of that is much higher than the returns that you earn from mutual fund, I would advise go and pay as early as possible, right? There is no one answer to this. It depends from person to person, right? Not everything in the world is rational or logical. Emotions also have a big role, right? Finally, the thing that matters to us is peace of mind. Where do you get peace of mind is what you should be doing. How much percentage should we invest in aggressive funds of your total fund? Raj Gurmit ji, it all depends on person to person. मुझे 100 का 100 रुपया एग्रेसिव फंड डालने में कोई डर नहीं है बिकॉज मुझे मालूम है कि वो टेम्परेरी डिक्लाइन रहेगा. जैसे कि स्मॉल कैप फंड है या मिड कैप फंड्स है, मुझे मालूम है कि जब 5 साल बाद उसका रिटर्न्स, मैंने आपको मेरा एक डीएसपी फंड का एग्जांपल दिखाया था, आज 13 साल हो गए एंड आई हैव बीन अर्निंग अराउंड 20% कैगर. बीच में ऐसा टाइम आया था जहां मैंने 5% रिटर्न्स बनाए थे, बट मुझे मालूम था वो टेम्परेरी है. सी आई एम लाइक दैट पैसेंजर इन अ बस. जब मुझे मालूम है कि डेस्टिनेशन बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, I am not afraid to have that volatile ride. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आंख बंद कर लूंगा लेकिन मैं वो जर्नी कंप्लीट करूंगा if I know the destination is going to be beautiful. And to me that 2% extra returns over a 20 period matters a lot, because that 2% extra returns between 12 and 14 may look very ordinary, but on such a big money and such a big time frame, this is a game changer. I told you it can be like 3 times your
overall portfolio difference. All right. So that is my take on this. Thank you so much. I think we are done. There are lots of questions. Masterstroke team, I don't think we'll be able to take now. Maybe you can write it. I'm still happy to see so many viewers still kind of there. We'll continue to do these kind of webinars from time to time. Masterstroke does a lot of good webinars, so please keep watching. Listen to other experts also, because you'll get different point of view. Okay. And keep learning, keep investing on learning. I think that will never disappoint you. With this, I would like to take your permission, friends. Thank you so much. I'm sorry I couldn't have answered many of those questions, right? And I had to rush very fast because of the time, this thing. But I hope I've been able to give you gist of my own story. I look forward to seeing you in Bombay. Jis din Rolls-Royce aa jayegi, you're most welcome to drive that, to inspire, to get inspiration, right? And I need your blessings to the 100 crore journey. I want to see many more idiots, in the coming years. And as I said, agar aaj humko acha laga, samajh mein aaya, please spread this, to your family, friends, relatives, near and dear ones. Let us all contribute towards this and make India a very financially independent nation, Atmanirbhar Bharat, jo hum bolte hain, in next 25 years. With that, thank you so much once again. Wish you all a very happy Independence Day. And as usual, it was a pleasure interacting with you. Thank you.